Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with very exciting news for JEE Advanced 2028 aspirants. We are launching batch 3 physics के लिए full length 11th plus 12th full course batch 3 0 to JEE Advanced level. We are going to go from 0 to JEE Advanced and ये बैच शुरू होने वाला है फ्राइडे. हर ऑल्टरनेट डे एक लेक्चर रिलीज होगा एंड इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बात करूंगा किस तरीके से डाउट्स क्लियर होते हैं, कैसे हम सिलेबस कवर करेंगे, कब कवर करेंगे एंड द बेस्ट पार्ट इज क्रैश कोर्स is also included for free after you finish the syllabus in our full course. You'll automatically get enrolled in the crash course. तो ये सब के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ. If you're sure about the fact that you want to clear or you want to crack JEE Advanced 2028, then this is the course for you. It's available at a discounted price. So definitely consider enrolling as soon as possible till the discounted offer is available. अभी मैं कोर्स के बारे में बात करता हूँ. I'm going to go to my website vinayupal.com and I'm going to show you exactly, I'm going to walk you through exactly किस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, कैसे हम हर चैप्टर को कवर करेंगे, कैसे डाउट्स क्लियर होंगे, कैसे टेस्ट देंगे and everything in detail. So I'm on my website vinayupal.com and अगर तुम यहाँ पे नए हो, you can explore the website on your own, like some my qualifications, some nice testimonials by students वगैरह. Let me just come to the courses section. तो यहाँ पे 2028 के लिए detailed courses में 3 batches है. I'm going to talk about batch 3 today. And तीनों batches में क्या फ़र्क है, क्या what is the difference between the 3 batches, ये पूरा ये इस चीज़ के बारे में भी मैं बात करूँगा बाद में. But for now I'm just going to talk about batch 3. So let me just click on view course. So I'll be taken to batch 3. एंड तुम्हें यहाँ पे शायद दिखाई देगा बाय नाउ एंड स्टार्ट अ फ्री ट्रायल. सो क्लिक ऑन स्टार्ट अ फ्री ट्रायल सो यू कैन एक्चुअली वॉच द ट्रायल लेक्चर एज वेल. फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलस, उसका जो लेक्चर्स है वो ट्रायल पर है, सो यू कैन वॉच इट फॉर योरसेल्फ. लेट मी जस्ट गो टू द कोर्स पेज. ओके, सो राइट हैंड साइड पे सारे चैप्टर्स जो अपलोड होंगे वो तुम्हें लिस्ट दिखाई देगा. सो फॉर नाउ आई हैव जस्ट शेड्यूल्ड दीज 4 चैप्टर्स एंड ऑफ कोर्स आगे जाके और भी चैप्टर्स ऐड करते जाएंगे. So calculus will begin 5th June, which is Friday. That is the first chapter that we're going to do. So कैसे course structure होता है, कैसे doubts clear होते हैं, let me just talk about all of that. Now, सबसे पहले तो यहाँ पे एक welcome message है that you can read for yourself. It's just a few points. Next, we start with calculus on June 5th. Now, this is going to be released. Module है, this is going to be released on June 5th. So let me just go to batch 2, जहाँ पे already uploaded है, जहाँ पे already released है. So I can actually show you the contents as well. Let me just go to batch 2. So batch 2 में जैसे यहाँ पे already uploaded है, we have already finished calculus vectors वगैरह. So हर chapter के starting में I will upload my module जिससे मैं homework दूंगा. So इस तरीके से module में several exercises होंगे and वहाँ से homework दिया जाएगा तुम्हें, and there will be other books as well जहाँ से homework दिया जाएगा. एंड हर होमवर्क का मैं वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड करूँगा. ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 2 3 4 सारे के वीडियो सोल्यूशन अपलोड करूँगा. एंड दिस विल बी अपलोडेड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर एंड देन लेक्चर 1. सो आई जनरली डिवाइड माई लेक्चर्स इनटू 2 or 3 स्मॉल पार्ट्स सो दैट इट्स ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू व्यू एंड एब्जॉर्ब. जनरली एक लेक्चर होता है अराउंड 1 hour, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 1 hour का लेक्चर होता है. बट इट विल टेक यू अराउंड मे बी 1.5 to 2 hours टू एक्चुअली वॉच इट, पॉज द वीडियो, मे बी समटाइम्स आई विल आस्क यू टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड टू एब्जॉर्ब ऑल द इन्फॉर्मेशन. वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है. इन माई एक्सपीरियंस इट मे टेक 1.5 to 2 hours एंड देन आई विल गिव यू होमवर्क. So homework I'll give you from the module and then later on as we go to further chapters I'll give you from homework from some good books as well. वो बाद में बात करूँगा मैं उसके बारे में. तो जैसे कि यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 1 3 9, एक्सरसाइज 2 से 3 क्वेश्चन, तो सारे उसके वीडियो सॉल्यूशंस अपलोडेड है. यू कैन आस्क अ डाउट इन दैट एज वेल. यू कैन आस्क अ डाउट इन द लेक्चर, यू कैन आस्क अ डाउट इन द होमवर्क सॉल्यूशन ऑल्सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. आई विल टॉक अबाउट हाउ डाउट्स आर क्लियर लेटर ऑन. ठीक है, तो तुम्हारा क्या काम है, जैसे 5th June को लेक्चर 1 अपलोड होगा तो यू हैव टू वॉच द लेक्चर, यू कैन आस्क डाउट्स इन द लेक्चर, यू हैव टू सॉल्व द होमवर्क. कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चेक द सोल्यूशन. वो उसमें कोई डाउट है तो यू कैन ऑफ कोर्स आस्क दैट एज वेल एंड देन गो टू द नेक्स्ट लेक्चर. सो लेक्चर 2 इसी तरीके से लेक्चर 2 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. देन उसका होमवर्क करोगे
and then lecture 3 and so on and so forth, and that is how we'll finish the chapter. All right, so बहुत ही structured तरीका है, and all you have to do is to remain consistent. Watch the lecture, ask your doubts, solve the homework. Video solution में कुछ नहीं समझ में आया तो ask a doubt, and then at the end of the chapter we'll have a test. Okay, so ये टेस्ट होगा और टेस्ट के भी सॉल्यूशंस मैं डालूंगा, और उसमें भी कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प विथ योर डाउट्स. ठीक है. नाउ यहाँ पर हाउ आर डाउट्स एक्चुअली क्लियर्ड, उसके बारे में मैं बताऊंगा. तो जैसे कि ये लेक्चर 3 पार्ट 2 है, एंड दिस इज बैच 2. I'm right now on the page of batch 2 because batch 2 में ये सब uploaded है, so I can show you. Batch 2 में जैसे Ashlesh has asked a doubt. So he asks a doubt. What he does is, what you can do is, कहीं भी तुम वीडियो देख रहे हो, you can just pause the video at whatever time you have a doubt and you can just post a comment here. तुम post करोगे तो that doubt will appear. यहाँ पे time stamp भी आ जाएगा. अभी मैंने वीडियो play नहीं किया, but once you play the video and you pause at any time that you have a doubt, then the doubt will automatically appear with a timestamp. So I know exactly in which context you're asking the doubt, and बहुत ही efficiently ये doubt clear हो जाता है. I have cleared 10,000 plus doubts on my website, and very efficiently, and students are extremely satisfied with the doubt clearing the way it goes. Okay, so I clear 100% doubts. अगर बहुत सारे students ये believe नहीं कर पाते कि 100% doubt clear हो जाता है, ऐसा offline में भी नहीं हो पाता, because generally only top batches get access to the best faculty, best teachers who clear the doubts. But here I'm the one who's teaching you and I'm the one who's going to clear your doubts. And अगर तुम्हें ये believe नहीं होता है, you can ask anyone who has already been enrolled in my courses. They can confirm, maybe in batch 1 or 2, or maybe your seniors. They will all confirm that I clear 100% of doubts. Okay, so जैसे कि यहाँ पर Ashlesh posted a doubt at 26:36 timestamp, तो automatic timestamp के साथ आ जाएगा. He asked a doubt, I explained, he understood, and we can have a back and forth conversation. मतलब you can still, अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो you can still continue. Okay, and you can even attach sometimes your own solution to check if you made a mistake. Okay, so it's a very efficient and a very thorough way of clearing doubts, and बहुत structured तरीके से. ऐसा नहीं कि generally online में क्या होता है कि लोग व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, टेलीग्राम पे डाल देते हैं डाउट्स, एंड देन वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं रहता. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड थ्रेड टाइप फॉर्मेट, मतलब जहाँ पे ये कन्वर्सेशन थ्रेड शुरू हो जाता है. अदर्स कैन ऑल्सो गिव देयर इनपुट, अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो पोस्ट, बट मेनली इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी. ओके, दिस ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे हैज़ बीन very यूजफुल फॉर मी एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. And I've cleared 10,000 plus. I think 12,000 तक हो गया रहेगा, अभी चेक करना पड़ेगा. Number of doubts that I've answered. Okay, so इस तरीके से हम चैप्टर ख़त्म करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा. सो लेक्चर्स विल बी रिलीज्ड एवरी ऑल्टरनेट डे. फ्राइडे, फिर संडे, फिर ट्यूसडे. सो एवरी ऑल्टरनेट डे वन लेक्चर विल बी रिलीज्ड, एंड टिल वी कैच अप विथ बैच 2. ये बैच 3 में बात करूँगा मैं, मतलब बैच 3 के लिए बात कर रहा हूँ. Lectures will be released every alternate day till we catch up with batch 2, and फिर उसके बाद Monday, Wednesday, Friday होगा. Okay, so that is the way. And syllabus कब खत्म होगा? Syllabus will get over in probably August 2026, sorry 2027 में ख़त्म हो जाएगा पूरा syllabus. Probably उसके पहले ही हो जाएगा, शायद जुलाई अगस्त में हो जाएगा. After which you will automatically get enrolled in the crash course, which is included in this course for free. And उस क्रैश कोर्स में भी we have lectures, we have homework, we have tests, and you are of course free to ask doubts in those as well. Alright, so पूरा एक complete structured ecosystem है ये to help you reach your full potential in JEE Advanced. And यहाँ पे जैसे कि let me just talk about the module a little bit more, because जो ये kinematics का मॉड्यूल है, that is more representative of the way the modules will be structured. So जैसे कि generally हर chapter में exercise 1 will be single correct, and exercise 2 will be one or more than one correct. Exercise 3 will be passage type, matrix match. Exercise 4 will be subjective, which is more like the numerical and integer type जो पूछा जाता है आजकल JEE Advanced में.
Okay, so all of this is geared to take you from complete zero to JEE advanced level. तो इसमें ऑटोमेटिकली मेंस का कवर हो ही जाता है बिकॉज मेंस का लेवल इज एक्चुअली वेरी लो कंपेयर टू JEE advanced. And once you prepare at the advanced level, then mains level automatically becomes easier. एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स के मन में कि पहले तुम्हें JEE मेंस का लेवल पढ़ना चाहिए एंड देन JEE एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली नॉट द राइट वे टू गो. एंड द रीजन इज it's a very basic fact that people who do well in JEE mains are the ones who are actually preparing for JEE advanced. ऐसा बहुत रेयर होगा कि जो JEE mains में जो अच्छे रैंक्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है JEE mains में, they are not studying for JEE advanced. ऐसा नहीं होगा. Alright, they are all students who are studying for JEE advanced, and जब basically it's a very not just in physics but in any learning process, once you study the harder thing, the lower level concepts and lower level things just become a lot easier. So once you study at JEE advanced level, JEE mains questions just become a lot easier. If you study only at JEE mains level, तो तुमको वही JEE mains level का ही तुम्हारे लिए वो normal level बनेगा. मतलब वो फिर जो toughest questions है अगर तुमने सिर्फ JEE mains के level के solve किए हैं तो तुमको JEE mains का वो level on the tough side लगेगा because that is your idea of tough. But as soon as you start solving JEE advanced, as soon as you force your mind to think in JEE advanced level, the approach that is required to solve JEE advanced questions, automatically you will experience JEE mains becoming very, very easy. So even if your aim is to get a good rank in JEE mains, you should start preparing with the aim of solving and understanding JEE advanced concepts. Okay, so that is what we do in our course, and we've had a lot of success over the years with the full batch जहाँ पे zero से advanced level तक लेके जाते हैं. So this is the way our course is going to flow. Zero से advanced full syllabus, फिर crash course, and of course हर chapter के बाद tests भी होते हैं. Alright, those tests are also of JEE advanced format. तो अभी तक जैसे बैच 2 में अभी तक टेस्ट जून 7th को रिलीज होगा. जून 7th पे शेड्यूल है, सो आई कांट शो यू दैट, बट इट्स गोइंग टू बी लाइक अ प्रॉपर JEE एडवांस लेवल टेस्ट. ऑलराइट, उसमें भी सोल्यूशंस में बना के डालूंगा, एंड अगर उसमें भी डाउट है तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क. ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, अ वेरी वेरी प्रूवन कोर्स. लास्ट फ्यू ईयर्स से बहुत स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग रियली वेल इन JEE एडवांस्ड फिजिक्स. So this is the way our course is structured, and we're going to begin June 5th batch 3. So there you have it. पूरा डिटेल्स मैंने बताया है किस तरीके से कोर्स फ्लो होगा, कब सिलेबस खत्म होगा, कैसे डाउट्स क्लियर करेंगे. एंड वीव हैड लॉट ऑफ सक्सेस इन द पास्ट with students who have enrolled in this full course, including JEE Advanced 2026 जिसके results some of them I have already published on YouTube. You can check them out, and पूरा compilation अभी करके results post होने वाले हैं मेरे YouTube channel पर very soon, so you can check them out as well. And a lot of students have given me unbelievable feedback, incredible feedback on this full course 11+12 0 to advanced. किस तरीके से उनका physics was elevated to JEE advanced level, and they were able to do really well, especially in JEE Advanced 2026, in which physics was one of the toughest papers in recent years. All right, so the discounted price is available for till we start on Friday. So if you're sure that you want to crack JEE Advanced, and if you're sure you want to enroll, do it as soon as possible. I will see you in my course, and I will see you at the top.